हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑन योर स्क्रीन। So the numerical of the day is a ball is dropped from a height of 20 meter. A second ball is thrown downward from the same height after 1 second with initial velocity u. If both the balls reach the ground at the same time, calculate the initial velocity of the second ball. देखिए, we have two cases here. Case 1, the ball is dropped. Case 2, the ball is thrown. Okay. फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं पहले. फर्स्ट केस में क्या है? इफ बॉल इज थ्रोन, लुक हियर, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज द बिल्डिंग. Building is of 20 meter height and the ball is a boy is standing with a ball on it. The ball is dropped. Here is a ball. This ball is dropped by this boy and it will reach like this to the ground. So what we have here is, this is case 1 when ball is dropped. Displacement is 20 meter as the height of the building is 20 meter. Second, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल विल बी 0. ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज ड्रॉप की जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. अगर उसको ड्रॉप करने वाला आदमी जो है या कोई ऑब्जेक्ट है व्हाटएवर रेस्ट में हो, इफ द बॉय इज इन रेस्ट एंड ही ड्रॉप ए बॉल, द बॉल मस्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. जब भी ड्रॉप होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब भी थ्रो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी. Okay, next what we have is acceleration. That is acceleration due to gravity g is equal to 10 meter per second square. It is given. Now, what we have to find out here is time. Why we need to find the time first? यहाँ से फर्स्ट केस से टाइम निकालेंगे, उस टाइम का यूज सेकंड केस के लिए करेंगे ताकि सेकंड केस हमारे पास इजी हो जाए. Okay, we have these three equation of motion. S is equal to ut plus half gt square, v is equal to u plus gt and v square minus u square is 2gs. हमें टाइम निकालना है तो हम इन तीनों इक्वेशंस में से जो मर्जी है वो यूज कर सकते हैं, बट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, g नहीं पता. दो चीजें ऐसी जो हमें नहीं पता, सो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. S is equal to ut plus half gt square. S is 20, u is 0 and half into g is 10 t square. So what we will get here, if we cut 2 with the 10 with the 2, we get 5. So it is 20 is equal to 5t square. Now 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, so 20 by 5 is equal to t square. So t square is equal to 4. 5 4 20. So t will be 2 under root both side. Okay. So time the ball take will to reach the ground is 2 seconds. It means to say, if I drop this ball at 9 hours 15 minutes 35 seconds, it will reach the ground at 9 hours 15 minutes 37 seconds. It will take 2 seconds. Okay, this is the first case. Now let's say this is the same building 20 meter high and this is the boy. Now he throw the ball. This is the ball. The ball will go downward. एंड लेट्स से, अब देखने वाली बात क्या है, इसने 9:15 पे 9 आवर्स 15 मिनट 35 सेकंड पे बॉल ड्रॉप किया था फर्स्ट केस में. सेकंड केस में ये बॉल को थ्रो करेगा 9 आवर्स 15 मिनट 36 सेकंड आफ्टर 1 सेकंड. ओके, ड्रॉप किया एंड द बॉल विल रीच द ग्राउंड एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट in both cases ball reaches the ground at the same time, means 9 hours 15 minute 37 seconds. So here time is 1 second, 36 to 37. Okay, केस को स्टडी करते हैं. केस 2, what we have, displacement 20 meter, acceleration 10 meter per second square, time 2 minus 1 is equal to 1 second, means पहले 2 second था, अब कितना लग रहा है 1 second, क्योंकि बॉल को थ्रो किया गया. इनिशियल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट. जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो यही था कि फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी बाय विच द बॉल इज थ्रोन. So we have these three equation of motion. S is equal to ut plus half gt square, v is equal to u plus gt and v square minus u square is equal to 2gs. अभी हमें निकालना क्या, इनिशियल वेलोसिटी. टाइम हमारे पास है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है. So here also we don't have final velocity. So
second and third equations will not give us anything, so we will use first equation. So here s is equal to 20, u we don't know, time 1, so plus half into 10 into 1 square, so it will be 20 is equal to u plus 5, 5 ones are 5, so 20 is equal to u plus 5. Now 5 will go that side and subtract, so 20 minus 5 is equal to u, so we get the u is equal to 15. U is initial velocity, so we get initial velocity is 15 meter per second. This is our main like question of this numerical, by which velocity the ball is thrown. So the velocity by which ball is thrown was 15 meter per second. Hope this is clear. If you still have doubt, comment in the section below. Thank you. In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.